Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 1. I am Samra Rashid, your science teacher here in BFC Nushar of Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our science class. Dear students, today we are going to solve exercise number 1 on book page number 48. Okay, so let us start. Dear students, first exercise is choose the correct answer. So first question is, what type of animal? Dear students, what type of animals live in the jungle? Option A, tame, friendly, wild, cuddly. Dear students, wild animals live in the jungle. So dear students, the correct answer is option C. We will be tick on option C, wild. Next is, which of the following is not a part of a fish? Eyes, tail, scales, legs. बेटा इनमें से फिश का कौन सा पार्ट नहीं है? लेग्स. लेग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फिश. फिश की लेग्स नहीं होती. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, वी विल बी टिक ऑन ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बर्ड? feathers, tail, legs and gills. Dear students, gills is not a part of a bird because gills is a part of a fish. गिल्स जो है बेटा वो किसका पार्ट है? फिश का पार्ट है. फिश जो है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं. गिल्स जो है वो बर्ड का पार्ट नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट्स अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड? अ किट, अ चिक, a pup, a tadpole. Dear students, a baby frog called a tadpole. Baby frog जो होता है वो क्या कहलाता है? Tadpole. Okay. Next is, which of the following animals eat other animals? A lion, a cow, a deer, a giraffe. Dear students, these all are herbivorous animals and these animals does not eat other animals. ये animals जो हैं ये दूसरे animals को eat नहीं करते. So the correct answer is option A, a lion. A lion eats other animal. बेटा एक जो शेर है वो दूसरे animals को खाता है. So the correct answer is option A. Dear students, now we have completed exercise number 1. Now it's turn to your homework. Now today's your homework is solve exercise number 1 on book page number 48 and also memorize it. बेटा आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व भी करनी है और इसको मेमोराइज भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास टुमारो. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.